Hello friends, welcome to Sword of Sir classes. This is the question number 17 from GATE 2026. So हम लोग के complex analysis से problem दिया गया है. The problem is f map C to C be defined by fz equals to mod z square minus 5z bar plus 2. Okay. So हम लोग को निकालना पड़ेगा कि कहाँ पर f differentiable है. We know that हम लोग एक तो statement जानते हैं कि if fz is a polynomial of z and z bar, then del f by del z bar equals to 0 at z equals to z0, then the function satisfy CR equation at z equals to 0, और हम लोग बोल सकते हैं the function is differentiable seeable at z equals to 0. This is the case when fz is a polynomial function of z and z bar, and जहां जहां पर z के वैल्यू के जहां जहां पर डेल एफ बाई डेल जेड बार 0 होगा फॉर z इक्वल्स टू 0, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. सो हम लोग देखेंगे यहाँ पर fz क्या दिया गया है. सो गिवन fz इज mod of z स्क्वायर माइनस 5z बार प्लस 2. इसको हम लोग लिख सकते हैं fz इक्वल्स टू z बार, बिकॉज mod z स्क्वायर को हम लोग z बार लिख सकते हैं 5z बार प्लस 2. सो देयरफॉर डेल एफ बाई डेल जेड बार हम लोग को क्या मिलेगा, डेल डेल जेड बार जेड जेड बार माइनस 5z बार प्लस 2. इसका वैल्यू क्या होगा, z माइनस 5. सो देयरफॉर del f by del z bar equals to 0 when z equals to 5. So the function satisfies CR equation at z equals to 5. Therefore, fz is differentiable at z equals to 5. So option B is the correct option. So B true. This is the simple problem from the CR equation of the function which is the polynomial of z and z bar, and this is the main formula which is to be used for this type of problem. Okay, thank you.